Hello everyone, welcome to Sports Khabri and Curious Harry. 2 days in a row, it's just me and Hiren. But yeah, we're here to do the honors and duties like always. 3-1 to Mohun Bagan in the end. This one, although I think there were a lot of people hoping for a Northeast sort of draw or a win. But Mohun Bagan sort of showed their might, showed their dominance in the end. We have a few talking points in this game, of course. It started off with a beautiful goal from Falguni. What a strike from outside the box. Deepak Tangri then equalized. Some would say keeper mistake. Some would say otherwise. We'll talk about it. Um, he didn't know much about it. Then Cummings, that was a nicely worked goal. I thought Sadiku's header perfectly into Cummings' path. He slotted it home. Tongdomba got a red card. I think much deserved. It was a second yellow, though, the one that they were arguing for. And finally, Subhashish Bose capped it off. Again, something that I thought that the keeper was at fault for, but we will discuss again. Hiren, your thoughts on the game first off? I think interesting match. Northeast United started very well. Score that brilliant, you can say, कि cracker jack of game, a goal from the Falguni Singh. Brilliant goal and 1-0 की लीड भी आ चुकी थी. एंड जिस इंटेंसिटी के साथ खेल रहा था तो लग रहा था कि भाई नहीं आज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड विल यू कैन से कि आज अच्छा परफॉर्म करेगी लेकिन उसके बाद जिस तरह से भाई यहाँ पे मोहम्मद बगान ने कमबैक किया आई थिंक दैट्स अ कमेंडेबल जॉब फ्रॉम मोहम्मद बगान साइड आई थिंक जो इंटेंसिटी दिखाई जो क्विक पासिंग दिखाई और अर्जेंसी दिखाई ऐसा नहीं था कि 1-0 से डाउन थे और अब आपको लग रहा था कि भाई अभी तो और ज्यादा गेम में टाइम है हम कर लेंगे लेकिन उन्होंने जैसे ही वो गोल एक कंसीड किया आई थिंक तुरंत आप देखिए जिस तरह से उनका गेम चेंज हुआ आई थिंक उसके चलते वो 2 गोल हमें देखने को मिले इन तीनों गोल में से अगर आप देखेंगे तो 2 गोल तो आई थिंक कीपर की मिस्टेक है जो पहला गोल भी जिस तरह से दीपक टांगरी वाला था दैट वाज अ लकी गोल दीपक टांगरी तो मतलब यहाँ पे आई थिंक शोल्डर के आई थिंक साइड यहाँ पे लगा था एंड Mirsad Michu should have cleared that ball. Simple as that. If you are playing in the ISL, and I think this is the expectation at least we have from the goalkeeper. And तीसरा गोल भी जो सुभाशिष बोस ने भी जो मारा, I think that should also be saved. I think वो भी सेव हो जाना चाहिए था क्योंकि इतना टाइट एंगल था, टाइम था, and he should have been you can say कि clear that ball out. सेकंड गोल आई वुड से उसमें उसका ज्यादा रोल नहीं था उसमें आई थिंक डिफेंडर की मैं गलती मानूंगा एंड आपने बिल्कुल सही बोला कि जिस तरह से अनिरुद्ध थापा ने क्या बोलते हैं कि ओवर दी हेड क्रॉस डाला तो अरमांदो सादिकू का ब्यूटीफुल ले ओवर फॉर दी जेसन क्यूमिंग्स एंड जेसन क्यूमिंग्स का भी अच्छा यहाँ पे क्या बोलते हैं पोजीशनिंग आई वुड से कि सही मोमेंट पे वहाँ पे अवेलेबल हुए एंड दैट्स अ ब्रिलियंट गोल सो I would overall say I think it's a deserving victory for Mohan Bagan जिस तरह की उन्होंने throughout the match performance दिए आशीष राय has been brilliant for me I think he played a really well game back line में I would say Hector Youth से Brendan Neville needs to you can say a little bit focus more I think जिस तरह से अब आप देखिए कि फर्स्ट थोड़ा-सा 10-15 मिनट में लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं एंड आई थिंक दिस इज़ अ क्रूशियल विन फॉर जॉन फर्नांडो एंड मोहन बगान क्योंकि आपकी जिस तरह से मतलब अभी क्लब जिस पोजीशन से गुज़र रहा है फैन्स का भी क्या बोलते हैं प्रेशर ज़्यादा है। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यहाँ पे मेरे हिसाब से काफ़ी क्रूशियल गेम था बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक उन्होंने हार के आई थिंक और भी ज़्यादा जो उनकी सिचुएशन है, अब उनकी भी थोड़ा-सा कंसर्निंग मेरे लिए मतलब होती जा रही है फॉर Pedro Benani. I think last 5-6 match only one win. So that's a concerning thing. So let's see how they are going to come back. Yeah, it's going to be interesting. Everybody in the chat, hello, Igor Stima, Sunil Chetri, Adarsh, Kanchan, everybody again uh, giving their takes. Igor says MSG not good. Of course, the keeper had his faults, and he's saying also that they will lose to Goa, Mumbai, and KBFC. Who are their next 3 games? It's not going to be an easy run before the winter break. So it'll be interesting to see if Mohun Bagan gets through that. In terms of this game, Hiren, for the first goal, do you think the keeper should have held on to the ball or should have punched it clear? I think punch it clearly punch भी क्लियर कर सकता था rather than you can say कि Okay. कलेक्ट करता तो मेरे लिए मतलब इट्स इट्स अ सिंपल रूटीन फॉर द कीपर और होना चाहिए इस लेवल पे तो एटलीस्ट आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके कीपर से ये तो क्लियर होना चाहिए था बट दैट्स अ बिग ब्लंडर फ्रॉम द मिर्साद मिचू एंड थर्ड गोल भी मतलब आई थिंक देयर शुड आल्सो बी मतलब आई थिंक इस क्वालिटी के कीपर से तो मतलब होना ही चाहिए। Yep, yep. Manvi and Subhashish Bose in the national team says Adarsh Mishra. Now the thing is, they were allowed to get up and ahead of the pitch because their Northeast were down to 10 men. It's going to be interesting to see if they continue to do this against the bigger teams because Exactly. yeah, they had their license. In the end, you see they're having fun. Mohun Bagan. I think they could have scored 5-6 in the end
if they'd actually put away their chances. So I think going down to 10 has also got a lot to do with it. But yeah, Parmeshwar saying the same thing: side punch or catch. He punches straight instead, yeah, which is not what keepers do. Either go with your fists or gather it completely. Yeah, yeah, completely agree. Um, Another suggestion that Northeast should sign another keeper, Dheeraj, in the winter. Of course, he's not playing for Goa. Hiren, do you think that Northeast need a change of keeper? Because I'm not convinced with Mirshad. I've not been since day one. I also kind of agree with you on that. मिर्शाद मिचू मेरे को भी उतने ज़्यादा कन्विंसिंग कीपर नहीं लगते, टू बी ऑनेस्ट। एंड इस तरह के मैच में कि जहाँ पे आप 1-0 की लीड हो एंड इस तरह से एक गोल कंसीड करने से आपकी टीम का भी मोरल डाउन होता है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है। एंड वही हमें क्लियरली आप देखिए जो फर्स्ट 10-15 मिनट देखेंगे, दे हैड अ ब्रिलियंट मतलब क्या बोलते हैं कि जिस तरह से इंटेंसिटी दिख रही थी प्लेयरों की and वो सारी चीज़ें, वो एक अलग लेवल पे ही लग रहा था कि यहाँ पे एक एक जो क्या बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड इस मैच को जीतने के लिए आई है। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे इक्वलाइज़र आया, उसके बाद का आप देखिए कि उनका जो यहाँ पे कॉन्फिडेंस है, वो सारी चीज़ें हैं। यानी कहीं न कहीं मेरे को थोड़ा-सा वो डगमगाती हुई दिखी एंड उसी का फ़ायदा मोहन बगान ने ज़्यादा उठाया मेरे हिसाब से और गेम को ज़्यादा Yeah. डोमिनेट करने की कोशिश की। सो डेफिनिटली कभी-कभी इस तरह की जो मिस्टेक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कीपर की मिस्टेक, कभी-कभी आपके डिफेंडर की भी इस तरह की मिस्टेक आपकी टीम की जो परफॉर्मेंस है, उसको यहाँ पे अफ़ेक्ट करता है। So I think they should definitely look for another keeper. I think there are a couple of options जो यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल है। धीरज सिंह इज़ वन ऑफ देम ऑब्वियसली। बाकी भी यहाँ पे दो 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे जो कि अभी दूसरे क्लब्स में जो बेंच पे ही बैठे हैं एंड उनको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। सो लेट्स सी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मैनेजमेंट एंड कोच क्या ये मतलब उनको लगता है कि यहाँ पे हमें ज़रूरत है अभी। We were discussing Deepak Tangri, I think, in the last few days. Hiren, convinced by his performance today? दीपक टंगरी आई थिंक कमिंग फ्रॉम अ लॉन्ग इंजरी एंड सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा। ही इज़ ए आई वुड से डिसेंट इनफ परफॉर्मेंस, नॉट बैड, नॉट दैट मच गुड आई वुड से। गोल ज़रूर मारा है उन्होंने एंड दैट वाज़ ए लकी गोल बट आई थिंक अगर ही आई थिंक ही इज़ बेटर देन ग्लान मार्टिन एट द मोमेंट। मतलब ग्लान मार्टिन से खिलाने से अच्छा है कि आप दीपक टांगरी को खिलाओ क्योंकि यू नीड अ क्विक प्लेयर। अब ग्लान मार्टिन जब भी खेलता है तो जो एक वो क्या बोलते हैं कि आपकी पासिंग और जो एक रोटेशन होती है बॉल की, वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को लगता है कि स्लो हो जाती है मोहन बगान की। आप देखिए आज जैसे ही उन्होंने फर्स्ट गोल कंसीड किया, उसके बाद जो एक चीज़ उन्होंने तुरंत इम्प्रूव की, वो थी पासिंग और क्विक यहाँ पे क्या बोलते हैं कि बॉल को आगे लेके जाना है एंड उसी में उनको स्पेसेस भी मिला। तो आई थिंक इस तरह के क्विक मिडफील्डर आपको थोड़े से चाहिए एंड टेंगरी हैज़ अ ग्रेट पोटेंशियल एंड जैसे-जैसे आई थिंक गेम टाइम मिलता जाएगा, आई थिंक वो कॉन्फिडेंस भी उसका बढ़ता जाएगा। सो लेट्स सी किस तरह से आगे डेवलप होता है। Yeah. Why are they playing two foreign centre backs? And do you think they should go for another Indian centre back? आई डोंट थिंक सो वो जाएँगे मेरे हिसाब से बिकॉज़ आई थिंक हेक्टर रुचेन एंड ब्रेंडन एमिल इज़ वेरी इंपोर्टेंट इन द एब्सेंस ऑफ अनवर अली। अनवर अली जब खेलता है तभी आपका एक इंडियन सेंटर बैक खेलता है इगो स्टेमिक साहब एंड उनको भाई सुमित राठी के ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं है। आप देखिए क्योंकि कभी-कभी उन्होंने बॉस को भी खिला लिया है रादर देन प्लेइंग सुमित राठी। सो दैट शोज़ कि जॉन फर्नांडो डिडन्ट हैव दैट मच कॉन्फिडेंस इन द अ, यू कैन से कि सुमित राठी एंड दे आर न्यूज़ ऐसी निकल के आ रही कि दे माइट go for another experienced Indian center back in the January transfer window. So let's see. Interesting, interesting. Of course, Anirudh Thapa in the 11 only bodes well for India, and the fact that now at least you still have a core of three central midfielders, even if you don't get Jackson, right? You still got Suresh, you got Apuya, and you've got Anirudh Thapa. So, yeah, I mean, let's just see what happens. Yeah, I mean, lucky goal, it is a lucky goal, right? I mean, we know नहीं, that there नहीं are a lot इसमें of lucky हाँ, goals, इसमें but इसमें then गलत it's क्या है? like, लकी गोल है तो गलत क्या है? वो तो गोल ही है ना। मैं yeah, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूँ कि वो गोल नहीं है। मैंने बोल yeah, रहा कि वो यहाँ पे लकी थे, उस पोज़ीशन पे थे भाई और जिस तरह से जिस एंगल्स जिस तरह से उनका यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि बॉडी को बॉल टच करके चला गया। दैट्स अ गुड थिंग। मैंने ऐसा थोड़ी बोला कि मोहन बगान ने इसमें कुछ नहीं किया। आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग भाई कि आपके लिए लकी गोल भी आया। जब आपके साथ मोमेंटम होता है तो ऐसे गोल आते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए भाई कि लकी गोल किया है। वो तो एट द एंड ऑफ द डे तो गोल ही है भाई। हम तो सिर्फ़ yeah. उसको कैटेगराइज़ कर रहे हैं। तो डेफिनिटली फर्स्ट गोल में कीपर की भी गलती थी। तो उसमें ऐसा तो नहीं है भाई। No, of course, like I don't, nobody can, हाँ। you can't call it a good goal, right? It's आप not a आप good आप goal. खुद दीपक टांगरी का रिएक्शन देख लो ना भाई उस गोल के बाद। वो दर्शाता है Yeah, कि भाई उसको भी पता है दैट वाज़ अ लकी गोल भाई, तो उसमें yeah. क्या है? Everyone in world football हाँ, has these moments. It happens in football. हाँ, So हाँ, yeah, yeah, एग्ज़ैक्टली भाई। और it's ऐसे fine. मोमेंट्स ही होते हैं। मैं तो मतलब आपकी बात से मैं
कई बार काफी सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे ऐसे गोल आ गया, तो मैं तो वही बोलता हूँ कि भाई दिस इज द फुटबॉल भाई, कि सामने वाली टीम की जब एरर होंगी और आपका प्लेयर वहां पे अवेलेबल है, तो वही तो फुटबॉल है। हर एग्जैक्टली। वक्त यहाँ पे परफेक्ट गोल नहीं देखने को मिलेगी कि बिल्डअप होके ही गोल हो रहा है। फुटबॉल में कभी आपको हर वक्त ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। देयर आर स्क्रैपी गोल्स, तो उसमें एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? Yeah, yeah, and it's all a part of the game. It's हाँ, एग्ज़ैक्टली, हाँ, you वो need to कोई score फेयर all एंड स्क्वेयर kinds of है। goals to हाँ, do. और Yeah, फेयर एंड स्क्वेयर है। हमने ऐसा थोड़ी बोला है कि भई वो गोल यहाँ पे लकी था इसलिए काउंट नहीं होना चाहिए। हम तो बोल ही रहे हैं भाई वो सिर्फ लकी गोल था, ऐसा बोल रहे हैं। yeah, yeah. I completely agree with Brandon. Indian goalkeepers need to learn how to claim balls. I've seen way too many keepers. The ball is coming in, simple gathers that you can just get into your body, but they decide to opt and punch out, and sort of doesn't help your situation in the end. Yeah. Do you think Northeast top six, Hiren? टॉप 6 में आई थिंक उनकी फाइट तो मेरे हिसाब से वो चलती रहेगी। आई थिंक चेन्नई एफसी, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट बंगाल, बेंगलुरु एफसी, दिस 3 और 4 क्लब्स। हाँ, बेंगलुरु एफसी तुम हो इसलिए मैंने बोल दिया। बट स्टिल I've also lost hope. nahin, nahin, but still I have a hope, to be honest. So I think these 3-4 clubs I think will fight for that 6th position. And बाकी जो टॉप 5 है, I think वो तो अपनी जर्नी जैसे चला रहे हैं, I think they will go continue with that thing. So I still have a hope because Pedro Benali is a very good coach, to be honest. And couple of their key player also is not available, or you can say कि वो वाली चीज़ थी। तो लेट्स सी किस तरह से यहाँ पे जान्युआरी ट्रांसफर विंडो में कोई यहाँ पे साइनिंग भी होती है क्या? वो भी एक इंटरेस्टिंग रहेगा कि उससे क्या स्ट्रेंथन टीम होती है। सो आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि वो एक कंटेंशन में तो रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि अभी से हम बोल दें कि भाई वो टॉप 6 के कंटेंशन में नहीं है। Hiren, this is an interesting point because there were a lot of chances for Mohun Bagan. Is it concerning that they couldn't put them away, especially Manveer, who we have to probably see in the Asian Cup? He had a couple of good opportunities and probably didn't make the most of it. What do you think? Is that worrying? मन मनवीर ने मिस किया, पेत्रातोस को चांस मिला था जो Petratos, मनवीर ने क्रॉस डाला था। देयर दोज़ आर द गोल्स शुड बी फिनिश्ड, बट आई थिंक बोथ कमिंग फ्रॉम द इंजरी। सो थोड़ा-सा रस्टीनेस आई थिंक वो होगी। एंड आई थिंक जैसे ही और ज़्यादा खेलेंगे, आई थिंक मेरे हिसाब से वो सही हो जाएगा। सो बट देन आई कंप्लीटली एग्री बिकॉज़ जो उनको एएफसी कप में भी मेरे को लगता है कि जो उनको क्या बोलते हैं कि एक ट्रबल दिया गया या फिर उनका कैंपेन खत्म कर दिया। आई थिंक वो वही था कि उन्होंने सही मोमेंट पे सही चांसेस को यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कन्वर्ट नहीं किया। एंड दे नीड mm, टू बी मोर क्लिनिकल, टू बी ऑनेस्ट। अंकित सिंह भाई का एक बेहतरीन क्वेश्चन है कि थॉट ऑन द लुइस मैकाटन। आई थिंक लुइस yeah, मैकाटन इज फ्रॉम द बेंगलुरु यूनाइटेड। लास्ट सीजन आई थिंक बेंगलुरु यूनाइटेड में खेल रहे थे। एंड इस सीजन उनको यहाँ पे साइन किया गया है। ही इज लुकिंग प्रॉमिसिंग, बट आई थिंक लेट्स सी कपल ऑफ मैचेस खेले, उसके बाद पता चलेगा कि हाँ भाई बंदे में क्या टैलेंट है। yeah, कियान yeah. नसीरी गेम प्ले टुडे। विष्णु विष्णु भाई पूछ रहे कियान नसीरी के बारे में क्या ख्याल है राहुल तुम्हारा? I हाउ think डिड यू सी टुडेस गेम? see, he's a he was there again. I think he always tries to get himself involved in the game, which is what I like it. I like from him because a lot of youngsters sort of you probably shy away in your early days, but he doesn't look like that. He looks like he's up for it, and he gets involved. Like that's what you want from a youngster, right? The goals will come. He's still young. Nobody's expecting him to score 5, 10 goals a season or Hmm. whatever. Get yourself involved in the game. Make sure that I felt like Kieran was in the game, so that's what is I think most One important. thing, Rahul, one thing I like about the Kian is positioning and his decision Yeah, making। अब देखिए जिस yeah, तरह से वो अपने आप को, ऐसा नहीं है कि एक ही पोजीशन पे रोटेट करता है, और जिस तरह से उनके टचेस भी है, आई थिंक दैट आल्सो yeah, आई थिंक प्रॉमिसिंग। तो आई थिंक उस हिसाब से आई थिंक आज का गेम भी मेरे लिए तो उसका मतलब आई वुड से उसका अच्छा गेम ही था। ऐसा नहीं yeah. बोलेंगे कि गोल नहीं आया या फिर असिस्ट नहीं आया तो बुरा गेम था। Exactly, आई थिंक ही इज exactly, अ गुड गेम। exactly the point, right? Like I think nobody. I'm not expecting him to score a goal every game. He played well. Like again, it's about at that young age, sort of showing yourself, being एंड there, आज and that's आज गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके 2 स्ट्राइकर के ऊपर ही थी भाई। ऑब्वियसली exactly, आप सादिक exactly. एंड क्यूमिंस जब खेल रहे होते हैं, तो गोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ही होगी भाई। तो आपका जो रोल है वो सपोर्टिंग रोल बन जाता है कि स्पेस उनके लिए स्पेस क्रिएट करना, उनके लिए यहाँ पे पासेस निकालना, सारी चीज़ें करना, उनको यहाँ पे Yeah, असिस्ट देना। तो आई थिंक गुड गेम। yeah, absolutely. Again, a lot of praise for Kian improving game by game. Um, so another one which sort of praised him. व्हाट डू यू से अबाउट द थापा? आई थिंक आज थोड़ा-सा साइलेंट परफॉर्मर वो रहा, मतलब अच्छा खेला Yeah, वो, बट yeah, हाँ, yeah. हाँ। Do you think like it didn't quite come from the midfield in the first half? It was sort of again even the goal.
head like a sort of crossish looping ball, and he's not down in goal and things like that. And then set piece goal. It wasn't coming through the midfield. That's why I think I felt like I didn't see too much of Thapa. Did you see a lot of Thapa today? मैं भी वही इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को भी मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं दिखा। बट आई थिंक Exactly. परफॉर्मेंस उसकी मेरे मेरे को लगता है कि अच्छी रही। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा आउट ऑफ द गेम था। आई थिंक अच्छा खेला वो भी। Yeah. I think we've already spoken about Mirshad Violet. Not the best performance from the keeper. I think at fault for 2 goals. Yeah, हमने especially तो when you भाई go उसका 1. रिप्लेसमेंट भी चालू कर दिया ढूँढना। Exactly. So, yeah, again pointed out by Lone Goat, straight to him. Yeah, not a great game for Mirshad. So it's okay. So again, Thapa, that's what we're saying, right? Like it didn't quite come through the midfield for Mohun Bagan, especially in that first half. When it was down to 10, it was easy. It was easy for them to ईज़ी play, and they ईज़ी। played their football. So yeah, फिर तो भाई राहुल फिर उसके ऊपर से प्रेशर ही हट गया था ना टीम। उनको पता ही exactly. था कि अब प्रेशर नहीं है। दे आर प्लेइंग फ्रीली। Yeah, yeah. उनको The fullbacks क्या were बोलते हैं running कि up and down after that. हाँ, Ashish Bhai एग्ज़ैक्टली and Subhashish उसको both were हाँ, they उसको were अपनी just chilling. डिफेंसिव पोज़ीशन को कवर ही नहीं करना है, तो फिर तो कोई Yeah, दिक्कत ही नहीं है उनके लिए फिर तो। yeah, yeah. Yeah. Again, a lot of unnoticed work, fair enough. But again, I wouldn't say it was a man of the match performance, at least from my side. Do you agree, Ray? Man of the match मैन ऑफ performance द for मैच तो मैं भी नहीं बोलूँगा, बट आई थिंक ही इज़ मैं ये इसलिए मैंने बोला कि ही इज़ अ गुड गेम, बट आई वुड नॉट yeah, से कि मैन ऑफ द मैच टाइप परफॉर्म। ही इज़ एवरीवेयर ऑन द पिच। अगर आप उसका हिट मैप भी देखेंगे, सो ही yeah, इज़ एवरीवेयर। yeah. Hiren, नॉर्थ ईस्ट के बारे में थोड़ी-सी yeah. बात करते हैं। पार्थ फाल्गुनी का गोल, बाकी Oh, कौन-से प्लेयर ने आपको नॉर्थ ईस्ट से इम्प्रेस किया? see, Bema Mayer always for me. I think बेमा मेर he's तो भाई तो वो तो है ही। class. Um, हाउ वुड यू रेट जितिन? जितिन ने मेरे को डिसअपॉइंट किया है, टू बी ऑनेस्ट आई you वुड know, से। Jitin is for me. Jitin is one of those players who I feel like has potential. Whenever I see him, I like what he हुँ, brings, but ब्रिंग्स हाँ। something is missing. Like there's some refined एग्ज़ि touch you need to उसकी put in. एग्ज़ीक्यूशन उससे वो मिस होता है ऑलवेज़। Yeah, ही हैज़ दैट पोटेंशियल एवरीथिंग, बट yeah. वो वाली चीज़ है। I think Jitin is raw. I think there's somebody, some good coach has to work with him, वर्क and there's a हाँ। player there. It feels like that. Yeah, yeah, crazy. But Hiren, of course, brilliant strike from Falguni. But now, where do Northeast go from here? Uh, it's. But again, they're not too affected because everyone around them is losing. So लूजिंग एग्ज़ैक्टली। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि ये जो 6th पोज़ीशन वाली लड़ाई है ना, ये थोड़ी-सी लंबी चलने वाली है। अगर कोई टीम यहाँ पे कंटीन्यूअसली वो मोमेंटम बना के जीतती नहीं है, तो आई थिंक ये बैटल और भी ज़्यादा लंबी जाएगी। इसलिए मैं बोल रहा yeah, हूँ चेन्नई एंड नॉर्थ ईस्ट एंड चेन्नई एंड आई थिंक जिस तरह से उन्होंने फॉर्म पिकअप किया है, आई थिंक नॉर्थ ईस्ट नाउ हैज़ टू बी यू कैन से कि अलर्ट कि भाई अगर उन्होंने रिकवरी नहीं किया, फिर उनका फॉर्म वापस नहीं आया, then it will be difficult to catch up for the 6th position also because जिस yeah. फॉर्म के साथ चेन्नई एफसी जा रही है, they looking like कि भाई they looking like a wow, तो वाली सिचुएशन है। Up next for Northeast is BFC away. They're here next weekend, so that's sort of an important game in a lot of ways. No, हाँ, एग्ज़ैक्टली फॉर बोथ द क्लब। yeah, exactly for both clubs. So it's going to be interesting. Cummings overrated in your opinion? By any? I have आई not. डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो सम प्लेयर है मतलब कोई हमने काफ़ी बार देखा है कि कुछ प्लेयर यहाँ पे सर्टेन लीग में इतना जल्दी सेटल नहीं हो पाते, सारी चीज़ें नहीं हो पाती। सो that might be the case with Cummings, but देखिए he has a always talent everything सारी चीज़ें तो है बंदे के पास। बट कभी-कभी नहीं हो पाता भाई किसी किसी जगह पे आपका वो सेटल नहीं हो पाते तो वो वाली Yeah, चीज़ है। fair enough. BFC come back tomorrow. Oh, please. I hope so. I just hope so. But yeah, Hiren, on India, of course, let's just quickly touch upon India as well because now we're getting closer as we get closer to the AFC Cup. Any positive signs for you for injured players coming back? Any signs that you're seeing? एक तो अनिरुद्ध थापा आज खेल गया, तो Yeah, वो मतलब फुल फुट फिट है। सहल अब्दुल मनवीर सिंह भी आज खेल लिया, तो वो एक अच्छी साइन है कि ही इज़ ऑल्सो नाउ फिट। yeah. सहल अब्दुल समद का एक्सपेक्टेशन है कि वो भी फिट हो जाएँगे। सबसे बड़ा सस्पेंस जिक्सन के अराउंड ही है, कि क्या वो टाइम पे फिट हो पाएँगे कि नहीं? आई थिंक उसके अलावा तो बाकी सारे प्लेयर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद टाइम पे फिट हो जाएँगे।
ब्रेंडन भी मेरे को लग रहा है कि नेक्स्ट 2-3 दिन या फिर उस टाइम तक वो हो जाएगा। सो मोस्ट ऑफ Hiren, द प्लेयर विल बी अवेलेबल नाउ। yeah, Hiren Sahal not on the bench also today. Worried because of that, maybe. नहीं, नहीं, आज तो नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आई थिंक जो एक्सपेक्टेशन उनसे है कि सहल मोस्ट प्रोबब्ली लास्ट वीक वीक ऑफ दिसंबर। सो आज तो आई Okay. थिंक डेफिनेटली वो बेंच पे नहीं होगा। Yeah, yeah. Will BSC's coach bring Quadrat like that? 'Cause I just want to answer that. He worked under him, हाँ, so बट maybe it's a possibility. So, yeah. बट एक एक चीज तो है राहुल, अब स्पेनियर्ड है तो उसका मतलब है कि वो पासिंग वाला गेम तो आएगा ही आएगा। Let's hope so. Let's hope so because that's what I hoped under Quadrat. Unfortunately, not quite. We played a lot of set piece, tried to capitalize on a lot of set piece situations. So let's see what happens. एंड समटाइम्स आपके पास किस क्वालिटी के किस प्रोफाइल के प्लेयर है उनके ऊपर भी फिर मैनेजर अपनी जो टेक्टिक्स है वो कभी-कभी वो करते हैं। तो True. उसको भी यहाँ पे ज़रगोज़ा को भी टाइम लगेगा। ये जो नेक्स्ट विंटर ट्रांसफर विंडो में आई थिंक देखते हैं कि कौन-सी साइनिंग किस प्रोफाइल की साइनिंग वो करते हैं। उससे भी ज़्यादा आइडिया मिलेगा कि व्हाट ही वांट्स। Hmm. Yeah. 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 Hidden. यस, यस। कोलकाता डर्बी कब देखने को मिलेगा? कोलकाता डर्बी तो वही अभी तो देखते हैं, पोस्टपोन तो हो गया है। अब देखते हैं, आई थिंक फरवरी में भी देखने को मिल सकता है। Yeah. Sal back for next game is what Igor Stimac is saying. ओके, दैट्स देन गुड साइन भाई, अगर नेक्स्ट मैच में वापस आ जाता है तो उससे बढ़िया तो क्या ही बात हो सकती है फिर। Yeah, absolutely, absolutely. Yeah, Hiren, back to India. Um, it does it do? Are you looking sort of? Does it feel better to see these players coming back, guys? Let's quickly just talk about India before we move back to club football and BSC and all of that. So yeah. आई थिंक दिस इज अ गुड साइन बिकॉज़ लॉट ऑफ प्लेयर के ऊपर अभी भी सस्पेंस बना हुआ था कि क्या वो फिट हो पाएँगे। सो आई थिंक धीरे-धीरे वो फिर से मैच में वापस आ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है प्रिपरेशन एंड क्या इंडिया यहाँ पे एशियन कप को सीरियसली ले रहा है, बिकॉज़ ऑल द अदर 23 कंट्रीज़ दे आर टेकिंग इट वेरी मच सीरियस। एंड Hmm, मैंने आज उसके रिगार्डिंग बात भी की। कुछ लोगों ने यहाँ पे मतलब जो आर्गुमेंट दिए, ओपिनियन दिए, आई थिंक मतलब कुछ लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे एशियन कप में हमें उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वहाँ पे कोई हमारा प्लेयर बड़ा प्लेयर इंजर्ड हो गया तो हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी वो हो जाएगा, अफ़ेक्ट हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे क्या बात कर रहे हो कि क्या बोलते हैं कि एशियन कप के मैचेस को फ्रेंडली से ही लेने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के अगर राउंड 3 में गए तो हमें 10 क्वालिटी मैचेस मिलने वाले हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आर्गुमेंट रख रहे हैं। लेकिन आई थिंक मेरे हिसाब से तो एशियन कप हमें का सीरियसली लेना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमारी प्रिपरेशन उस हिसाब से नहीं है। ना तो हम उस तरह से हमें कैंप मिला है, ना तो हमें उस तरह से कोई फ्रेंडलीज़ खेल रहे, बिकॉज़ ऑल द अदर कंट्रीज़ आर प्लेइंग फ्रेंडलीज़, ऑल द अदर कंट्रीज़। किर्गिस्तान प्लेइंग 4 फ्रेंडलीज़। देयर आर ए सब कपल ऑफ कंट्रीज़ जो कि यहाँ पे 1-1 मंथ का यहाँ पे कैंप लगा के बैठे हैं। नो डाउट उनकी वहाँ पे लीग खत्म हो चुकी है, लेकिन इंडिया भी यहाँ पे अरेंजमेंट कर सकता था ना। राहुल, तुम ही सोचो, अभी इन लोगों ने क्या किया कि सुपर कप को यहाँ पे एशियन कप के साथ कर रहे हैं, ठीक है? yeah, stupid इसमें decision. उन्होंने सुपर कप आप साथ में कर रहे हो। तो Yeah, आपने आईएसएल को ये एशियन कप के टाइम में भी कंटिन्यू रखा होता और उसमें रूल डाला होता कि आईएसएल में भाई 6 फॉरेनर अलाउ है, जिनके भी यहाँ पे मेन टीम के प्लेयर वहाँ पे गए हैं, और आप अभी 15 दिसंबर से आप कैंप स्टार्ट कर देते। तो उसमें क्या दिक्कत थी फिर? yeah, ऐसा exactly. भी तो आप कर सकते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एएफएफ अपने तरीके से काम कर रहा है, एफएसडीएल अपने तरीके से काम कर रहा है, और किसी को वो पड़ी नहीं है। भाई वो अपना देख रहे हैं कि भाई चल रहा है, चलने दो सारी चीज़ें ऐसे ही। तो इसी के चलते आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बाकी लोगों को भी पता है जिस तरह से पूरा इस साल का कैलेंडर रहा है। तो जिस तरह से इन लोगों ने गलतियाँ या फिर मेस्ड अप कर दिया है, उससे काफ़ी टूर्नामेंट तो हमने बिना प्रिपरेशन के ही गँवा दिए हैं। एशियन कप ले लो, Hmm. मेर्देगा कप ले लो, किंग्स कप, सारे टूर्नामेंट ऐसे टूर्नामेंट है कि किंग्स मेर्देगा तो चलो भई आपको वहाँ पे तो उतना टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आवाज़ आ रही है क्या मेरी? Yeah, 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 yeah. Yeah, Hiren, all good. तो वहाँ पे तो हमको पता ही है कि वो नहीं हो पाता, लेकिन एटलीस्ट एशियन कप के लिए तो आपको बेटर प्रिपेयर होना चाहिए था। आई थिंक 3-4 वीक्स Exactly. मिलने चाहिए थे टीम को, फ्रेंडलीज़ मिलने चाहिए थी। आपकी टीम बेटर तरीके से मेरे हिसाब से तो प्रिपेयर हो पाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिचुएशन नहीं है। I think it's very clear. At least one thing is very Asian Cup comes once in 4 years.
Very, very important tournament. It's like Arnav said before, it's like a World Cup for us because we don't play the World Cup. This is our World Cup. And if we're not going Hmm. to take this tournament seriously, what will we take seriously? We get two tournaments. One is your World Cup qualifiers and one is your Asian Cup that you feel like, oh wow, it's a big tournament and it's a big occasion, something you look forward to. And now you're saying you don't take it seriously. Come on. Um, yeah, but anyways, running through a few comments here. नहीं नहीं Roshan नहीं saying, नहीं रचित रचित बापना भाई, डेफिनेटली भाई हम लाइव वन वन ऑन वन भी इंटरेक्शन करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हर किसी तरह का वो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं वही बोल रहा हूँ कि काफी सारे लोग वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स राउंड 3 के सपने जरूर देख रहे हैं कि उसमें 10 मैच मिलने वाले हैं। लेकिन अभी आपके सामने जो चैलेंज है उसको तो आप पहले टेक ओवर कीजिए। और hmm, इसको मतलब इसलिए स्किप कर देना कि टफ ग्रुप मिला है। भाई ये एशियन कप है, थोड़ा आपका साफ चैंपियनशिप है, तो आपको हल्का ग्रुप मिलेगा। ये तो 2027 में भी खेलोगे तब भी टफ ही ग्रुप मिलेगा भाई। yeah, 2031 yeah, में खेलोगे तब भी टफ ही मिलेगा। आप जब तक आप अपना लेवल अप नहीं yeah. करोगे तब तक कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको यहाँ पे ईज़ी ग्रुप मिलने वाला है। आप Yeah. खुद इम्प्रूव हो जाइए ना। आप इंडिया अगर मान लीजिए कि एशिया में 10th पोज़ीशन पे आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपको फिर जो एक आध कंट्री है या फिर एक एक आध कंट्री ऐसा लगेगा कि हाँ भाई इनको तो हम हरा ही सकते हैं। अभी तो आप ही खुद यहाँ पे 17 या 18वीं पोज़ीशन पे हो। तो आपको तो बाकी की ऊपर की जितनी भी टीमें मिलनी है, टफ ही मिलनी है भाई। Yeah, yeah, और ये कभी yeah, भी मेंटालिटी होनी नहीं चाहिए भाई किसी भी कंट्री का कि भाई ये टफ ग्रुप मिल रहा है इसलिए हम इस टूर्नामेंट को यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। दिस इज़ yeah, हाउ नॉट यू शुड यू कैन से की प्रोग्रेस। yeah. Quickly running through some comments here. Roshan saying Uzbek striker Shomurodov is out, might miss due to foot injury. Kyrgyzstan playing four friendlies before the Asian Cup, like Kiran just mentioned. We don't have me. Syria apparently a month-long camp plus friendlies. So a lot of these teams will sort of come in well prepared. It's going to be interesting to see what India do. Uzbekistan are also playing friendlies. Yeah, yeah, absolutely. That's what we're trying to say. We have to take both these tournaments seriously. But the Asian Cup is sort of like it's a finals tournament, right? The World Cup qualifiers are not at the end of the day. हुँ, So for me, I sometimes even feel the Asian Cup is bigger than the World Cup qualifiers because हुँ। it is a finals tournament and the World Cup qualifiers are very, very important. Don't get me wrong at all. But this is it. Like there is nothing more than sort of you can't go more ahead. Sort of World Cup qualifiers is still a progression stage. You can go to the next level. But yeah, that's probably why I think AFC Asian Cup is very, very important. And और yeah, एक चीज़ आप गाइज़ जो भी लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि राउंड 3 में हमें 10 क्वालिटी मैचेस मिलने वाले हैं और उसमें लेकिन आप ऐसा मत एक्सपेक्ट कीजिए कि 10 मैचेस मिलने वाले हैं तो उसमें भी हमको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा क्योंकि वो सारे भी आपके मार्च, जून एंड आपकी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाली विंडो में होंगे। उस टाइम पे आपका मार्च में आईएसएल चल रहा होगा, जून में मोस्ट प्रोबेबली आपका नहीं चल रहा होगा, सो वहाँ पे प्रिपरेशन मिल जाएगी। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जो भी मैचेस होंगे, उसमें भी आपको यहाँ क्या बोलते हैं कि प्रिपरेशन टाइम इतना ही, इससे भी कम मिलने वाला है, 3, 4, 5, 6 दिन, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला। तो आप उस टाइम पे हम ये बोलने लगेंगे कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है। तो आपके लिए जो अभी आप एक्सपोज़र की बात कर रहे हैं कि भाई हमें बड़ी टीमों के सामने खेलने मिल होना चाहिए। आपको मिल रहा है भाई एशियन कप में आप 3 बड़ी टीमों के सामने खेलने को मिल रहा है। आप उसी को सीरियसली नहीं ले रहे हो और आप आगे का सोच रहे हो। भाई आपके सामने जो नेक्स्ट स्टेप है उसका सोचो ना पहले कि हाँ भाई इसमें कैसे अच्छा करना है। अब उसके बाद देखो भाई बाकी क्या चैलेंजेस है आपके सामने। hmm. Yeah. Here in two ISL games, of course, lined up for tomorrow as well. Will before we get to the Super Cup, now BFC Jamshedpur, the first one tomorrow. Again, very, very interesting. Um, what do you think? How do you think this will play out? BFC Zaragoza साहब बिग मैच फर्स्ट ऑफ ऑल एंड जमशेदपुर एफसी के लिए भी बिग मैच। दे आर आल्सो लुकिंग फॉर दैट पिन। सो इंटरेस्टिंग मैच होगा। दोनों ही टीमें डाउन एंड आउट अभी तो है एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो स्कॉट कूपर को भी यहाँ पे अपनी टीम से एक्सपेक्टेशन है, पर्टिकुलरली फ्रॉम देयर फ्रंट लाइन फॉरवर्ड्स। आई थिंक स्टीवेनोविच, मेंजारो, यहाँ पे चिमाचुकू, स्टीवन एम्ब्री, इन सबको यहाँ पे स्टेप अप करना पड़ेगा। दे नीड्स टू स्कोर अ गोल, सिंपल एज़ दैट। बिकॉज़ डिफेंसिवली आई एम सीइंग गुड जमशेदपुर एफसी। मेरे को नहीं लगता कि उतना ज़्यादा डिफेंस में दिक्कत है। आई थिंक देयर मोर कंसर्न इज़ अबाउट द स्कोरिंग द गोल। दे क्रिएट चांसेस बट अनफॉर्चुनेटली दे डिडंट कन्वर्ट इट। एंड बेंगलुरु एफसी के लिए आई वुड से मतलब दिस इज़ अ
big match, I would say, for that confidence, I think. And let's see how they are going to react after that coach change and everything. I think what are the Yeah, motivation for players now? It will be interesting to see. absolutely. Very, very, very crucial game for both sides. Again, quickly wrapping up a couple of comments for India. Got to take both tournaments seriously. Exactly. I think Exactly. that's the point. That's pretty much it. Just take both tournaments Uh, seriously and go in. Like, yeah, I don't know why it's that hard, but yeah. Anyways, yeah, BSC big game. Zargosa's first game, especially at home. Hopefully, the fans will be there to be behind him and uh, cheer him on. And I think BSC sort of need the fans right now. So a lot of people, I hope, will turn out. It's a Saturday in Bangalore. It'll be good to see some crowd for this. And I just want to see more of Curtis Main. If he कल plays, तो if he कल तो starts, भाई ईस्ट बंगाल वर्सेस मुंबई सिटी है. yes, at night 8 o'clock kickoff is East Bengal Mumbai as well. दो मैच है क्या कल? हाँ भाई. Yeah, 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 Saturday. So That's early right. kickoff is BFC, 5:30 kickoff, and then 8 o'clock kickoff is, of course, our East Bengal versus Mumbai. How do you see that one going, Kiran? Mumbai versus East Bengal, interesting match, and the comment by Rodson Griffiths, I think, is very interesting one. I think he is, मतलब he basically said that both the बैक टू बैक मैच मुंबई सिटी के दोनों कोलकाता क्लब के साथ है. तो उन्होंने बोला कि उनको मतलब क्या बोलते हैं ये दोनों को धो के वापस मतलब धोना धो इन अ सेंस कि दोनों को यहाँ पे उस तरह से भेज देने से अच्छा है. सो रियली इंटरेस्टिंग मैच. कार्लोस गुजरात की टीम मतलब 5-0 विन देन सडनली अ ड्रॉ. So that is the trajectory of the East Bengal for this season. So they need to win this match for that sixth position contention. And Mumbai City के लिए भी यहाँ पे under new coach यहाँ पे पीटर क्रेटकी. आई थिंक लेट्स सी हाउ दे आर गोइंग टू रिएक्ट. एंड होम पे खेल रहे हैं, डेफिनेटली दे हैव एडवांटेज. कपल ऑफ प्लेयर्स डूइंग रियली वेल फॉर देम, particularly विक्रम प्रताप सिंह doing great. ग्रेग स्टुअर्ट, नासिर अल खयाती, इस कॉम्बो इज वर्किंग, धीरे धीरे वर्क करने लगा है फॉर देम. विनीत राय लुक्स प्रॉमिसिंग, जब भी चांस मिला है उसको. अपुया इज इन ग्रेट टच. यहाँ पे मेहता भी धीरे धीरे अपनी फॉर्म वापस आ रही है, दैट्स अ गुड साइन. राहुल बेके हैज बीन ब्रिलियंट. Rodson Gitfis, Tiri, Akash Mishra is looking also good. So that's a positive sign. So lot of positives for Mumbai City. ईस्ट बंगाल के लिए भी यहाँ पे फ्रंट लाइन सीवेरियो, नंदा कुमार सिकार एंड नोरेम महेश इज डूइंग ग्रेट. मिडफील्ड भी अच्छा कर रही है. बैक लाइन Hmm. में यहाँ पे दे नीड टू बी लिटिल बिट मोर सॉलिड अगेंस्ट टीम अटैकिंग टीम लाइक मुंबई सिटी. सो इंटरेस्टिंग बैटल होंगी मेरे हिसाब से. दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग मैच, बट आई वुड गिव अ स्लाइटली अहेड जैसे कि मुंबई सिटी एज पर देयर फॉर्म होम पे खेल रहे सारे एडवांटेज. Yeah. Rachit says 3-1 to Mumbai. I think fair enough. I don't think anybody is going to go against Mumbai at the moment. They're of course well-oiled, well-drilled machine that go into games. Yeah. Also, Hiren, predictions for the BSC game? BFC game, I would say, I think it will be 1-1 draw. I think I am going with 1-1 draw. Okay. Okay, interesting. 1-all Mumbai East Bengal, says Sunil Chetri. I'm Interesting, going of course. with in Mumbai versus East Bengal. I'm going with 2-1 to Mumbai City. Fair enough, fair enough, fair enough. Yeah, Rohit Kumar injured. JFC win 5-0. Okay, fine. तो फिर तो भाई Um, जरगोजा जरगोजा पहले ही मैच में सेक हो जाएगा. Bangalore is pathetic, says Rachit. I mean, yeah, they're not playing that well, but I think tomorrow is the day things change. BFC Day, win tomorrow, says Sunil Chetri. Let's hope so. mm. Um, Hiren, quickly on the Super Cup foreigner rule, six up to six foreigners allowed in the starting lineup. Very interesting choice. I think this is important because a lot of the national team players will be away for the Asian Cup. Is it? Do you think it's largely because of that? यस यस डेफिनेटली बिकॉज Yeah. आपको एक फेयर ग्राउंड तो देना पड़ेगा. कुछ क्लब इससे डिसएडवांटेज में जाते हैं. एंड दिस इज अ गुड डिसीजन. बनाना ही था आपको ये डिसीजन, क्योंकि आपने मतलब जिस तरह की प्राइस भी रखी है कि एसीएल का स्पोर्ट है, तो सभी क्लब्स अब सुपर कप को भी सीरियसली लेंगे. नहीं तो सिर्फ ऐसे ही होता तो यहाँ पे काफी सारे क्लब्स को फर्क भी नहीं पड़ता कि भाई उनके फॉरेन इंडियन कुछ की इंडियन प्लेयर्स अगर एशियन कप के लिए खेलने चले गए हैं, तो वो अपने यंगस्टर को खिला लेते हैं. जो कि हमने पास्ट में भी देखा है, जब सुपर कप एंड में होता था लास्ट टू लास्ट ईयर, तब काफी सारे उनके फॉरेनर्स को वो रिलीज कर देते थे. वो अपने इंडियन प्लेयर Hmm. के साथ ही सुपर कप खेल लेते थे.
तो इस बार क्योंकि एसीएल का स्पोर्ट है तो डेफिनेटली आप सभी क्लब्स का भी कंसर्न रहा होगा कि भाई हम तो फिर डिसएडवांटेज हो जाएगा हमें। तो आई थिंक उसमें कोई दिक्कत तो मतलब आई थिंक उससे थोड़ा-सा फेयर फेयर ग्राउंड मिलेगा आपके बाकी जो क्लब्स है उनके लिए। Exactly. Fair enough. A lot of people want Tata, Komal Tata to start tomorrow. Vineet, Sunil Chhetri both saying it'll be good for him if he starts and he'll do well. Harshit saying BFC were good until Miku was there. I mean, yeah, fair enough. That was a different era. That was a different level of quality, I think. Yeah. So, do you see any particular sort of advantage to teams who have the better? I mean, of course, there is a big advantage to teams that have better foreigners. So you think again it will be the same conversation? Mohun Bagan will do well, Mumbai will do well. They have better quality foreigners. Do you see them doing better than the rest? आई थिंक सो। आई थिंक दैट विल आल्सो इम्पैक्ट द गेम एंड आई थिंक बाकी जो आपके इंडियन प्लेयर है उनके ऊपर भी आई थिंक काफ़ी ज़्यादा डिसाइड करेगा कि किनके पास बेंच स्ट्रेंथ पे काफ़ी अच्छे इंडियन प्लेयर है। क्योंकि आप देखिए मोहन बगान एंड दे नो डाउट वेरी गुड इंडिया फॉरेनर्स बट आप देखिए उनके पास इंडियन प्लेयर भी क्वालिटी वाले हैं और मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग फॉर द नेशनल टीम। सो उनके Yeah. जगह पे उनको यंगस्टर को खिलाना पड़ेगा। सो आई थिंक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि एक लेवल फील्ड ही हो जाएगा मेरे हिसाब से कि कुछ आपको एडवांटेज होगा, कुछ आपको डिसएडवांटेज होगा। तो उस हिसाब से देखेंगे आप। तो आई थिंक ये परफेक्ट है मेरे हिसाब से। Not too sure about this, Brendan. I think he still cares. I think you can see it in his tweets. There is a sort of pain that Parth's in the last, and I've seen Parth in the stands with the West Block, and he's one of those guys who feels the emotions. You can just you at least that's what I could tell as a fan. He was right behind us, and yeah, he's somebody who does feel sort of every second of the game. So yeah, fair enough. हेलो Cool. गेमलैंड भाई, हेलो, हेलो। Hello, Gameland. Yeah. Um, Hiren, yeah. So we've run through pretty much everything. Fair enough. Thanks everyone again today for joining in. Two big ISL games tomorrow. BFC play Jamshedpur at Bangalore, and then you've got Mumbai taking on East Bengal in Mumbai. So yeah, like and share these streams, guys, and subscribe to the channel. Sports Kabri, Curious Harry, Arun Foot, and Indian Food and Football. We'll be back again as usual. टुमारो। Good night. Yeah. गुड नाइट गाइस।